हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रंजन कुमार, आई एम फिजियोथेरेपी स्टूडेंट। सो आज हम स्टार्ट करने वाले डिराइव पोजीशन ऑफ सेटिंग। ऑलरेडी मैंने स्टैंडिंग और नीलिंग की डिराइव पोजीशन वाली वीडियो बना ली है। वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, आई बटन पे भी उसका लिंक मिल जाएगा। सो हमारा फर्स्ट पोजीशन है डिराइव पोजीशन सिटिंग का। पोजीशन ऑफ लेग अल्टर्ड, इट मीन्स हम लेग को अल्टर्ड करके हम पोजीशन डिराइव कर सकते हैं सिटिंग का। सो हमारा फर्स्ट है स्ट्राइड सिटिंग। Stride sitting, it means somebody is sitting between a bench or a table with both leg have abducted with 2 feet apart. It means it exactly similar to the fundamental position, except that the legs are abducted so that the feet are up to 2 foot length apart. It means distance between the 2 foot is a 2 length foot apart. This increases stability of the position, especially in the feet are pressed into the floor. ये बेसिकली हमारी बॉडी की स्टेबिलिटी को मेंटेन करवाता है। और ये इसमें जो हमारे फुट होते हैं वो फ्लोर को टच कर रहे होते हैं। इसमें हमारी बॉडी की स्टेबिलिटी को मेंटेन करवाने के लिए इसमें बैलेंस एक्सरसाइज, स्टैंडिंग एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हम करवा सकते हैं। सो ये बेसिकली हमें स्ट्राइड सिटिंग हो गया। नेक्स्ट है हमारा राइट सिटिंग। राइट सिटिंग, इट मीन्स समवन इज like settle down in like motorcycle and a bike or a horse or something like that. So this position, sitting at a right suitable apparatus like riding a bike example, it means you are like riding a bike or bicycle. Muscle work is abductor of hips works to the keep knee together. जो abductors होते हैं hip के और knee के, वो बेसिकली वर्क कर रहे होते हैं स्ट्रांगली। क्योंकि अगर हम कोई भी बाइक या एनिमल राइड लेते हैं तो हमारे abductors वो उस एनिमल की बॉडी से हमारे लेग को टाइटली होल्ड करके रखते हैं ताकि हमारी बॉडी का जो बैलेंस है ना बिगड़े और हम फॉरवर्ड या बैकवर्ड ना गिरे। तो हमारे abductors जो होते हैं वो ये एनिमल है और ये हमारे लेग है, दोनों तो होल्ड टाइट करके रख देते हैं ताकि हमारी बॉडी इधर उधर ना स्लिप कर जाए। सो इसके इफेक्ट और यूजेस क्या होंगे, हमारे abductor स्ट्रांग होंगे, हमारे नेक और ट्रंक के जो अपर लिम्ब की है वो एक्सरसाइज हो जाएगी, स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी। जो हमारे लेग जो है वो स्विंगिंग, लेग की जो स्विंगिंग जो मूवमेंट है फॉरवर्ड बैकवर्ड, वो स्विंगिंग एक्सरसाइज हो जाएगी। और अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट से हमारी सारी एक्सरसाइजेस इससे राइट सिटिंग से हो जाएंगी। नेक्स्ट हमारा पोजीशन है क्रुक सिटिंग। क्रुक सिटिंग में बेसिकली क्या होता है, पेशेंट इज सीटेड ऑन प्लेंथ और फ्लोर, दे विल बी सपोर्टेड टू द वॉल एंड द leg and thighs supported on the floor. So sitting on a floor with knees so that the feet are together and flat on the floor. feet दोनों feet together हैं, साथ में हैं और flatted हैं फ्लोर के ऊपर, और hip भी settle down है फ्लोर के ऊपर। हमारा हैंड है फ्लेक्स्ड है। सो इसमें मसल वर्क क्या होगा, फ्लेक्सर ऑफ हिप, फ्लेक्सर ऑफ नी एंड द प्लांटर फ्लेक्सर ऑफ एंकल आर वर्क टुगेदर। फ्लेक्सर ऑफ हिप, इट मींस the iliopsoas muscle are flexing the hip joint. Flexor of knee, flexor of knees hamstring is flexing the knee joint, and flexor of ankle joint, it means the tibialis anterior, plantar flexor, the tibialis anterior are work together to make a crook sitting. So इसके इफेक्ट और यूजेस क्या होंगे, इसके इफेक्ट और यूजेस ये होंगे कि pelvic is fixed, पेल्विक फिक्स्ड हो जाता है तो इसका एंटीरियर और पोस्टीरियर टिल्टेशन नहीं होता है। तो इससे हम एक बेस्ट एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं विदाउट द टिल्टेशन ऑफ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टिल्टेशन ऑफ द पेल्विक। स्ट्रेंथनिंग ऑफ द बैक मसल एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ द कोर मसल, इसमें भी हम एक्सरसाइज करवा सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ काइफोलोडोसिस, अगर किसी पेशेंट को काइफोलोडोसिस हो गया है तो इस पेशेंट में यहाँ कर्व उसका बिगड़ जाता है, तो इस पेशेंट को हम इस पोजीशन में लाके हम उस मसल का स्ट्रेंथनिंग करवा सकते हैं और हम लेन देन करवा के उस मसल में इलास्टिसिटी जनरेट करवा के मसल को लाइक डिफरेंट स्ट्रक्चर दे सकते हैं ताकि वो एक बॉडी जो है काइफोलोडोसिस उसका कम हो जाए। स्ट्रॉन्ग वर्क फॉर एक्सटेंसर ऑफ थोरैसिक स्पाइन, थोरैसिक स्पाइन की जो एक्सटेंसर है वो वीक हो जाती है तो हमारा पुअर पोस्चर हो जाता है। तो पुअर पोस्चर को मेंटेन करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हम इस पोजीशन में, क्रुक सिटिंग पोजीशन में हम उसको एक्सरसाइज और स्ट्रेंथनिंग करवा सकते हैं। नेक्स्ट पोजीशन है हमारा लॉन्ग सिटिंग। लॉन्ग सिटिंग में क्या होता है, जो हमारा पेशेंट होता है वो बैक जो होती है उसकी वॉल से सपोर्ट रहती है और जो हमारा लेग होता है वो फुल्ली फ्लैट होता है सरफेस पे। सो सिटिंग ऑन अ फ्लोर सो दैट द नी आर एक्सटेंडेड एंड द होल लेग इज सपोर्टेड ऑन द फ्लोर। सो एग्जांपल इज अ पोस्चर ऑन योगा। योगा में हम ऐसे पोस्चर बना के बैठ सकते हैं। सो मसल वर्क क्या होगा, एक्सटेंसर ऑफ नी इज एक्सटेंडिंग द नी जॉइंट और लेग, द against and preventing the agonist muscle, like agonist muscle is a hamstring, so it preventing the contraction of the hamstring. Prevertebral neck muscle prevent the forward rotation of the head. Back muscles like latissimus dorsi and splenius capitis muscles can support the
back to the prevent forward bending. Core muscle is strengthened because of that to prevent forward or backward bending of the body. And the anterior tibialis anterior is most strong, like do a plantar flexion, because the foot is going to the forward like dorsiflexion, so it neutralized the tibialis anterior. Also the like calf muscle is neutralized both of the action and neutral to the position of the foot. So effect and uses the hip rotation. The rotation of the hip is doing in these exercises. Strengthening stretches the hamstring muscle, strengthening the strengthening of the like isometric exercises of knee and foot, doing in this position. Ankle, knee, and trunk exercises of the strengthening and stretching is doing this position. Upper limb exercises and stretching are doing in this position. Also the balance and coordination on the sitting position, if the patient is comes after the spinal cord injury and like neuro patient, for the develop the balance, doing this activity in this position is good for that. So this is the long sitting. Next position is cross sitting. It means someone is sitting in like that the whole both legs are crosses, and one leg lateral part is touches to the floor, and one leg is lateral part is touches to the another leg of middle part. So hips are flexed, hips are also flat, abducted and laterally rotated. Abducted, the both leg is abducted to each other. Knees are flexed and lateral part of the knee is pressed to the ground. The both of the neck and lateral part of the knee is pressed to the ground, but one leg is pressed to the another legs, and some or another one leg is pressed to the ground. So floor level activities like eating. If someone is eating on a floor, so that is a good position. That is the position of sitting on a floor and eating something in lunch or dinner. So effect and uses. What is the effect and uses? Trunk and neck exercises to holding the neck and back muscle. So it is that good position. Hip abductors and stretching. The stretching of the hip abductors. If someone has cerebral palsy, if they have a like strong muscle tendon, so if look like that, if I'm stretching of abductors, so this is a good position to stretch the abductors and like get more elastic of abductor. Next position is high sitting. So if when someone seems like that is long sitting, but there is a position is like some distance between the floor to the bed. So a long sitting is nearby to the floor, but high sitting is upward to the floor. So if someone is sitting on the plinth or a table, it make a distance between some centimeter on that. So make a curvature to upright the body. Neck joint is upright to the head. Shoulder joint is stable. Knees bilaterally, some make an angle or a flex some degree. A foot and ankle joint make some angle between leg to foot. So the fundamental sitting position taken on a high plinth or table. Feet is unsupported. Feet are unsupported. They are fully like that. The bed are plinth is that position. So foot are not in a supported position. They are on a air. And effect and uses is the trunk exercises. Trunk rotation, forward bending, lateral bending, and the breathing exercises are doing in this position is very good. And the knee and ankle exercises of this isometric is also doing in this position. So our next position is side sitting. So what is side sitting? If someone is like making an angle of both leg is 30 degree or 40 degree something to the thigh. So for left side sitting, this is left side sitting. Left hip is flexed, abducted, and laterally rotated. Hip is flexed, also knee is flexed and laterally rotated and abducted to the both of them. So right hip is flat, abducted, and medially rotated. So right leg is like flexed and adducted, and there is a medially rotated. Knees are also flexed, both of the knees flexed. Pelvis tilted with left side because it's a left side sitting, so it is a tiltation of the left side. So muscle work. What is the muscle work? Erector spinae help to stand upright, bend sideways. जो हमारे इरेक्टर स्पाइनी होते हैं, स्पाइन के मसल होते हैं, वो हमारे बॉडी को अपराइट रखने में हेल्प करती है और साइड वे में भी फॉल डाउन होने से प्रिवेंट करती है. जो हमारे ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल होते हैं, वो हेल्प कर रहे होते हैं पेल्विक को और स्पाइन को स्टैंड रखने में. तो देयर इज अ ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल work to strong to lead back like laterally and medially bending of the body. So
there is that kind of abdominis muscle, transverse abdominis muscle work. So next is the oblique side of the abdomen are cervical for torso rotation and lateral bending and trunk stability. जो हमारे oblique muscle होते हैं, there is also make a major role to like a lateral bending and of the trunk, and the torso rotation of the trunk is prevented. So there is a very strong muscle for the oblique, which is prevent the forward and lateral bending, assist in forward bending, and prevent for the lateral bending of the body is to be prevented or not has to be done. So it is a very good position for doing activity and extending for the core muscle. So if I can use a strong exercise, increase strong mobility and extending of the core muscle. So that is the side sitting. What is next sitting is a changing the position of the trunk. So stoop sitting. Stoop sitting means someone is sitting on a chair or a table with make some angle of their thoracic and neck of the chair. So trunk is flexed such as a trunk, head and arms in alignment. Trunk is flexed and make some alignment, same alignment. Arms are to be folded and supported on the tables. Arms are folded and supported to the leg and on some other table, like sitting on a table and like study. So what is the effect and uses? So arms are and back exercises and hollowing the lumbar spine is to be avoided. So this is the hollow position, and the lumbar spine make a lumbar to be hollowed, and there is to be done to the exercises to be like core and balance mobility and strengthening of the core muscle. So that is the stoop sitting. Next our position is fallout sitting. Fallout sitting means someone is making some distance between the chair and a leg is supported to the floor, and the body is in same angle and forward bending. The position is the same as a fallout standing, except that the hip and thigh is a forward leg supported. The hip and leg is a forward supported and make a same angle. The patient is able to contract on movement. The muscle is contracted and the patient is able to contract to do this position, and it is ability to like someone is a fallout and the blackout, and there is a balance problem, to keep their hand on our hand and therapist hand and ask to the patient to like stand by yourself if they're having a balance and fear problem. So what is the muscle work? So muscle work, core muscle like pelvic floor and abdominis, these are strengthened in this activity and in this like posture of sitting, and these are essential for spinal stability. If they have unstable spinal and they have lateral forward bending is more, so fallout sitting is like that, doing some activity in this position to strengthen our back and core muscle. So effect and uses what? The core balance exercises is done in this position is good. Reduce fear of fall and during the sitting. So that is the effect and uses. Thank you.